we derive the equation for potential energy, kinetic energy and total energy of a particle performing SHM. We got conservation of total energy. Total energy is given by the formula half K omega square, where K is force constant, but we know K as m omega square, so you can rewrite it in the other form half K a square, where a is amplitude in SHM. Rewriting it with the help of force constant, we can write it as half K by m is omega square, so half m omega square a square. So this is form number 1. This is equation for total energy in terms of omega square. So it is form number 2. Omega can be written in terms of periodic time or frequency. Omega is 2 pi into frequency. If you rewrite omega as 2 pi f or 2 pi n, you will get one more form. क्या हो जाएगा? देखो ओमेगा 2 pi n, उसका स्क्वायर हो जाएगा. So 1 2 will get cancelled with this 2. f will be left. 1 2 will be left. Pi square will be left. So when you simplify, you will get 2 pi m. 2 pi, this m, this is n square into क्या आएगा? a square. So this is one more form for expression of total energy in terms of frequency. You can rewrite the term of frequency in terms of periodic time. You know n is equal to 1 by t. So I could write the same as 2 pi m a square into n square will be 1 upon t square. So this is equation number 4. So you can rewrite the expression for total energy in different forms in terms of different variables occurring in linear SHM. So using this, you can draw few conclusions. You can write the factors on which this total energy depends. So what has happened? A is constant for given motion, half is constant. So total energy is proportional to force constant. This is the first inference. Total energy proportional to K, that is force constant. What we can draw the second inference? It is independent of M. इसमें कभी भी displacement की टर्म नहीं आ रही है. So you can say total energy independent of displacement of a particle performing linear SHM at every and each position along the path performing linear SHM. Total energy is conserved. This is the second inference. What is the third? 1 minute wait. What is the third inference? Proportional to square of amplitude. If you select this for given periodic time for given particle, these all terms will be constant. Left will be a square. So it is proportional to square of amplitude. If amplitude is constant, it is proportional to square of the frequency. And it is inversely proportional to square of the periodic time. So these factors affect value of total energy. It is question number 6. अपना exercise खोलो. Exercise में question number 6 है on page number 129. Get the exercise open on page 129. उसमें question number 6 निकालो. In question number 6, last 2 lines state the factors on which total energy depends.
तो वो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. On which factors total energy depend? You can rewrite the equations and you can write total energy proportional to force constant. Force constant ज्यादा है तो particle performing linear ascension possesses greater total energy. Independent of x, proportional to square of the frequency, proportional to square of amplitude, and inversely proportional to square of the periodic time. So these factors you can find by just rearranging and rewriting the expressions for periodic time in terms of number of variables. So while we discussing TE, we found TE as a summation of potential energy and kinetic energy. So we also found general expression for potential energy as well as kinetic energy when displacement of a particle is x from mean position. They were half m omega square x square, and for kinetic energy we derived it as half m omega square in bracket a square minus x square. ये दोनों जनरल फॉर्म है, एडिशन करके हम लोगों को ये फॉर्म टोटल एनर्जी का मिल जाता है. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. बेस्ड ऑन लेट अस सॉल्व फ्यू न्यूमेरिक्स फ्रॉम द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के जो कुछ न्यूमेरिक्स है ना वो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ इन टुडेज लेक्चर. सो वी विल प्रोसीड फर्दर. सपोज फॉर न्यूमेरिक नंबर 8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं. क्या दिया है? एट व्हाट डिस्टेंस द पार्टिकल स्पीड विल बी हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. सो वी विल स्टार्ट विद द solution where path length is given. So path length means what? It is not amplitude. Path length is entire length. So be sure you should not take amplitude as 10. But in this case amplitude is 5. Path length यानी कि value of mn. But amplitude is om or on. So amplitude A should be taken 5. Not 10. हाँ सॉल्यूशन चालू करती हूँ मैं. एम्पलीट्यूड गिवन इज 5 सेंटीमीटर. ये अपना पहला दिया हुआ है. व्हाट इज द अदर गिवन? इट इज मूविंग अलोंग सर्टेन पाथ. इट हैज एट वन सर्टेन पोजीशन इट हैज half its maximum value of velocity. What is maximum value of velocity? कितना निकाला हम लोगों ने कल? a omega. And general expression for velocity at any distance x कितना निकाला? डिस्प्लेसमेंट x है तभी omega square root a square minus x square. So this velocity a omega by 2 इतनी होनी चाहिए, and that distance you have to find from the mean position. ऐसा इसका मीनिंग है. So what we will equate? This is equation 1 and this is equation 2. So velocity at given instant should become half its maximum value, that is a omega divided by 2. So with this we have to start the derivation. So आप लोगों को क्या निकालना है? x square निकालना है, x निकालना है. We have to find displacement of a particle from mean position at that particular position. This equation should tally. So this omega will get cancelled. So I could write squaring on both sides. A square minus x square will be a square. 2 square कितना होगा? 4 होगा. So rearrange the terms. Rearranging you can rewrite for x square right side पे लेते हैं तो पॉजिटिव होगा. a square by 4 लेफ्ट पे लेते हैं तो वो नेगेटिव होता. तो a square minus a square divided by 4. So this is the equation by means of which you can find value of x. अभी आगे क्या करना है? देखो 1 minus 1 by 4 कितना आता है? 3 by 4. So 3 by 4 a square
should be equal to x square. a की वैल्यू कितनी है 5, 5 5 से कितना है 25, so it will be 3/4 into 25. You take square root on both sides, so you will get value of x will be there square root 325/4. 25 का 5 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, सो 5/2 बाहर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। इतनी डिस्प्लेसमेंट उसकी आनी चाहिए, सो दैट at that displacement, at that particular forming position at distance 5/2 square root 3 centimeter, the particle will have half its velocity. ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 5/2 is 2.5, root 3 तो 1 point something है, so when you multiply it will be nearly 4 point something. 4 के आजू बाजू आप लोगों का आंसर आ जाएगा। So this is numeric number 8. Similarly, you can solve numerics number 9. 9 का भी देखो, 9 turn over the page. We will proceed further for numeric number 9. 9 का देखो क्या है, 9 में दिया क्या हुआ है देखो, in SI unit differential equation is given and they have asked you to find value of frequency and period. What is general expression for differential equation? d2x/dt square plus omega square x is equal to 0. So if you rearrange, you will get d2x/dt square is minus omega square x. This will be your first step. You compare the general expression with the given expression. Given expression क्या है? 36x. d2x/dt square is 36x. So you comparing this with general expression, you can write omega square as 36. So omega will be 6. You know omega is 2 pi upon t or 2 pi n, and that value is 6. So you can find n by dividing this 6 by 2 pi. You can find t by dividing this 2 pi by 6. ये t राइट जाएगा तो 2 pi by 6 t की वैल्यू आएगी, और n आने लाने समय क्या कर देगा, 2 pi हम लोगों को डिवाइड करना है, so 6/2 pi. So this is period and this will be frequency. Rearrange करो तो भी चलता है, 3.14 है यानी कि 6 point something आएगा, so 6 point upon 6, so periodic time will be greater than 1 something, 1 point something second आएगा. Take reciprocal of t, you will get n. So this n will be 0 point in hertz. SI यूनिट दिया है ना, तो n की वैल्यू हर्ट्ज में आएगी. ये 1 से ज्यादा है, पीरियोडिक टाइम इज ग्रेटर देन 1, सो 1/1 point something will be less than 1, that will be 0. Nearly something 99 आएगा, 1/1.1 0.9995 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ये 1 से कम आएगा, यानी कि this particle is unable to complete its one complete oscillation in 1 second. 1 second में वो अपना एक ऑसिलेशन भी पूरा नहीं कर पा रहा है. 99% of oscillation it is able to complete in 1 second, because these are the number of oscillations in 1 second frequency, यानी कि तो वो पार्टिकल एक भी ऑसिलेशन पूरा नहीं कर पा रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है. So this is numeric number 9 from exercise on page number 130. Similarly, you can solve numeric number 11. मैं बोलती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 16 it is also easy, related with expressions for energies, potential, kinetic as well as total. ये 3 क्वेश्चंस आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं. I will move further for question number 18. मैं 18 के ऊपर जाती हूँ. देखो क्या है ये 3 मैंने जो बोले है ना 11, 12 और 16 एकदम इजी है, यू कैन गेट इट आराम से.
तो मैं 18 पे ऊपर जा रही हूँ। 18 में देखो क्या दिया है, पीरियड ऑफ पार्टिकल इन SHM हैविंग मास m इज t। एक पार्टिकल है SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड, व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम, और उसने क्या बोला है, व्हेन पार्टिकल, एक पार्टिकल है, सपोज लाइक दिस, उसका मास इनिशियली कितना है, m1 दिया हुआ है। इट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन विथ पीरियोडिक टाइम t। हम लोग t की वैल्यू, t1 की वैल्यू t लेते हैं। जब भी मास m1 है तभी पीरियोडिक टाइम t1 है। अभी उन लोगों ने क्या किया है, विदाउट एनी डिस्टर्बिंग एनीथिंग एल्स, ये जो स्प्रिंग वगैरह है ना, उसको उन लोगों ने बदली नहीं हुई, चेंज नहीं की हुई है। सो फोर्स कांस्टेंट के दे आर नॉट चेंजिंग, what they are doing, they are changing the mass of the system। ये फर्स्ट बॉडी है, उसको उन लोगों ने और एक मास अटैच किया है, of mass m2। so mass is increased and you know periodic time t proportional to mass। so नया मास कितना हुआ, m1 plus m2। so जब भी मास m1 plus m2 है तभी पीरियोडिक टाइम t2 है, ऐसा उन लोगों ने बोला है। एंड दैट t2 इज डबल द फर्स्ट, 2t इतना है। मास m1 है तो पीरियोडिक टाइम t है, मास m1 प्लस m2 हो गया तो पीरियोडिक टाइम 2t हो गया। यानी कि क्या, इफ मास इज इंक्रीज्ड पीरियड आल्सो इंक्रीजेस, इट इज वन ऑफ द इन्फरेंसेस, and hence they have asked to find value of m1 and m2 separately। m1 और m2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ऐसा उन लोगों ने पूछा है। so we will start solve this example। so what is t, t का क्या रहेगा रे, जनरल एक्सप्रेशन क्या है, 2 pi square root फोर्स कांस्टेंट अपॉन मास। ये एक्सप्रेशन पीरियोडिक टाइम का, force constant they have not altered, they have only increased the mass। so when mass is m1, t is t1, when mass is m2, that is m1 plus m2, by keeping k constant, period is t2 and its value is 2t। so this is equation 1 and this is equation 2। compare them, division ले लो। suppose divide equation 2 by 1, so what will happen, this 2 will be left, 2 pi will get cancelled, ये टर्म ऊपर आएगी, ये टर्म नीचे जाएगी, k will get cancelled, m1 will go up and this m1 plus m2 will come down and this will be square root। वो स्क्वायर रूट वैसे रखेंगे ना, इक्वेशन 2 by 1 करना है, सो इक्वेशन 2 का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से m1 कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट 4 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन आप लोगों को मिल जाएगा। विल प्रोसीड फर्दर विद दिस। सो 4m1 माइनस m1 क्या होता है, 4m1 प्लस 4m2 विल बी देन m1। So rearranging the terms, m1 लेट लो तो 3m1 रहेगा और ये राइट लिया तो 4m2 रहेगा, बराबर है। So you can rearrange the terms and you can find the values of m1 m2 in the ratio। रेशो मिल जाता है, 1:3 आएगा, definitely it will 1:3। So solve this further, you will get the last answer। I am not solving the entire numeric because block table is never used or is not required for solving this numeric। So I am providing you only the hints and before proceeding further। ये जो numerics है ना एग्जाम एक्सरसाइज में से आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। So we have solved question number 8 और क्वेश्चन नंबर 7 का जो हाफ पार्ट है, सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, वो मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 16 18 हम लोगों ने सॉल्व किया एंड 11, 12 एंड 16 यू कैन इजीली सॉल्व टेकिंग द जनरल एक्सप्रेशन।
So this is all about the numerics based on what we learned up till now. जो हम लोगों ने सीखा है ना एसएचएम के बारे में, उसके आधार पे मैंने थोड़ी न्यूमेरिक सॉल्व करके ली है. So solve this numeric as assignment number 4 in your assignment notebook as well as in classroom workbook. Twice you will have the practice. जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे लिखने की, उसमें आप लोगों को ज़्यादा नहीं आएगी. I will solve numeric. I will share with you on the group. हिंट के लिए मैंने जो सॉल्व की है वो न्यूमेरिक्स आपको ग्रुप पे भेज